capacities as well as collectively under the framework of SCO RATs to combat the three evils of terrorism, extremism, and separatism. Excellencies, the achievement of lasting peace and security in the region is both a common concern as well as a responsibility of all honorable SCO leaders. Stability in Afghanistan is critical for achieving this common objective. The international community currently finds itself in a standstill with Afghanistan. The cascade of unmet expectations has meant that critical support needed by Afghanistan to ward off a grave humanitarian crisis, prevent an economic meltdown, and to combat terrorism has been withheld. This policy needs an urgent reset. The international community should meaningfully engage with the interim Afghan government to take the next steps. Similarly, the interim Afghan government must also take concrete measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity. A peaceful and stable Afghanistan will not only bring economic dividends to the Afghan people, but would also unlock the true economic potential of the SCO region as well as contribute to global peace, security, and progress. The SCO Afghanistan Contact Group has an important role to play in providing a platform for practical cooperation. Excellencies, climate-induced disaster is knocking on our doors. Being a global crisis that threatens humanity's survival, climate change demands global solidarity and a global response. It's time to act, and we must act now and immediately. Pakistan has lived through the horrors of climate change during the last year's devastating floods that took more than 1,700 precious lives, including those of children and babies born just few days ago, and inflicted unimaginable losses of over $30 billion on our economy. Pakistan is committed to working for a sustainable and nature-positive world that we owe to our future generations. We must also ensure that developed countries deliver on their assurances to provide enhanced support to developing countries in mitigating and adapting to the effects of climate change. Excellencies, poverty alleviation remains a pressing and burning issue for SCO member states. The heightened military tensions across the globe and unprecedented hike in energy and food prices, coupled with economic recession in the aftermath of COVID-19 pandemic, have taken a heavy toll on our efforts to address the challenge. The presence of the largest number of poor people on the planet within SCO borders obliges us to have closer cooperation for poverty alleviation. I would like to thank and congratulate the SCO states on establishing the Special Working Group on Poverty Alleviation that was proposed by Pakistan. This working group has become operational and will provide an impetus to our collective efforts to eliminate poverty and improve the living standards of our people. Excellencies, to achieve the goal of sustainable peace, the fundamental rights and freedoms must be guaranteed to all, including those under occupation. Peace and communal harmony should replace violent ultra-nationalism and xenophobic ideologies, especially Islamophobia. Furthermore, we should resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination. There should be no place for the willful provocations
and incitement to hatred, especially on religious grounds. The SCO stands for observance of the UN principles of sovereignty, territorial integrity, and people's right to self-determination. We must ensure for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. With more than 40% of the world's population and almost a quarter of the world's GDP, the SCO represents a promising future, if only we can work together to seize it as a team and community. To achieve this cherished goal, I reaffirm Pakistan's unwavering support and commitment to address our common challenges and to realize our shared dreams of peace, prosperity, stability, and enhanced connectivity of the SCO region. I thank you all. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करे थे। उन्होंने कहा कि SCO इजलास में तमाम सरबराहान को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान खित्ते में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए कोशां है। मौशी रवाबित बढ़ाने से खित्ते में तरक्की और अमन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान यूरोप और एशिया को मुंसलिक करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि CPEC में शामिल बंदरगाहें खित्ते को मिलाने में किरदार अदा कर सकती हैं। खित्ते में होने वाली हर दहशतगर्दी की काबिल मजम्मत है। रियासती दहशतगर्दी कहीं भी हो, कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी इंतहा पसंदी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में सिक्योरिटी और अमन तमाम SCO मेंबर्स का मुश्तरका मामला है। अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान से निमटने के लिए मदद फराहम करना होगी। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में बहरान हल करने के लिए किरदार अदा करना होगा। रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। SCO की चेयरमैनशिप मिलने पर काज़ाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी सदर को SCO मेंबर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान को SCO फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। बेलारूस को भी शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मौशी रवाबित बढ़ाने से खित्ते में तरक्की और अमन को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान SCO के अज़म का भरपूर इरादा करता है। मजहबी बुनियाद पर नफरत को फरोग देने से रोकना होगा। कोरोना की वजह से दुनिया भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, महंगाई का सामना हुआ और कोरोना की वजह से आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। पाकिस्तान को तबाही का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मजहबी बुनियाद पर नफरत को फरोग देने से रोकना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान से निमटने के लिए मदद फराहम करना होगी। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में बहरान हल करने के लिए किरदार अदा करना होगा। तालिबान हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर इक़दाम करना होंगे। वकील कत्ल केस चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक राजा मोहसिन। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वकील कत्ल केस में 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वकील कत्ल केस में आज होने वाली समाअत 2 रुकनी बेंच ने